Hello and welcome to Vision of Asia, the news you can trust and events that move and celebrate our very own South Asian community. I'm Piya Jyoti Kachru coming to you from our ITV Gold studio in New Jersey. In the headlines today, Justice Stephen Breyer plans to retire. Amid UP elections, book on Yogi Adityanath reaches America. Flying car cleared for takeoff, but you will need a pilot's license. India announces squad for West Indies ODIs and T20s. Lata Mangeshkar off the invasive ventilator. Mika Singh promoting his new song. And let's take a break and we will be right back after the break. US Supreme Court Justice Stephen Breyer has announced his plans to retire. Justice Stephen Breyer is the most senior among the three judges appointed by the Democratic presidents. This news has already started a flurry of activities in the White House working overtime in nominating a replacement judge. This may be the only nomination President Biden gets to make if he can do this before the Senate might be taken over by the Republicans. President Biden has previously publicly stated that he would like to nominate a black woman judge to the Supreme Court. Here are some of the potential leading candidates making the rounds. DC Circuit Judge Ketanji Brown Jackson, California Supreme Court Justice Leondra Kruger, South Carolina U.S. District Court Judge J. Michelle Childs. Other names that have been floated include Sherilyn Ilfel, a civil rights attorney, Anita Earls, a 61-year-old North Carolina Supreme Court Associate Justice, District Judge Wilhelmina Mimi Wright, a judge on Minnesota's Federal District Court, Circuit Judge Eunice Lee, a former New York public defender, Circuit Judge Candace Jackson Ekiwumi, an alumna of Chicago's Public Defender's Office. Amid UP elections, book on Yogi Adityanath reaches America. A book describing the transformation of Uttar Pradesh under Chief Minister Yogi Adityanath is evoking curiosity among the diaspora in the United States. Its author Shantanu Gupta has said. Shantanu Gupta, who started his US tour of the book on Yogi Adityanath from New York and New Jersey last week, said many non-resident Indians were curious and wanted to know the Uttar Pradesh growth story under a monk chief minister in the light of upcoming assembly elections in Uttar Pradesh. The author said he is amazed to see the curiosity among diaspora to know more about the transformation of Uttar Pradesh under Chief Minister Yogi Adityanath, and the book The Monk Who Transformed Uttar Pradesh provides the answers. Shantanu Gupta has written 2 books on Yogi Adityanath, the other being The Monk Who Became Chief Minister. During the visit, he will attend multiple events organized by the Indian diaspora and talk about both books. Gupta said spiritual organization Om Kriya Yoga and World NRI Association, along with other Indian organizations, are organizing the book discussion events in more than a dozen states and cities of United States: New York, New Jersey, Boston, Washington, D.C., North Carolina, Chicago, Atlanta, Dallas, Houston, Los Angeles, San Diego, and San Francisco. Shantanu Gupta said he will attend multiple events for his book in community centers.
think tanks, temples, universities, media studios, city libraries, and will meet intellectuals from the Indian diaspora during his stay in the United States. In the tech news, flying car cleared for takeoff, but you will need a pilot's license. A car that can transform into a small aircraft has passed flight tests with flying colors in Slovakia, developers say. The air car was awarded an official certificate of airworthiness by the Slovak Transport Authority after completing 70 hours of rigorous flight testing, according to Klein Vision, the company behind the dual-mode car aircraft vehicle. The test flights, which included more than 200 takeoffs and landings, were compatible with European Aviation Safety Agency standards, the company said in a press release on Monday. The challenging flight tests included the full range of flight and performance maneuvers and demonstrated an astonishing static and dynamic stability in the aircraft mode, the company said. A spokesperson for Klein Vision said that a pilot license is required to fly the hybrid vehicle and added that the company hopes to have the air car commercially available within 12 months. A team of 8 specialists clocked up to more than 100,000 hours, converting design concepts into mathematical models that led to the prototype production. The air car is powered by a 1.6-liter BMW engine and runs on fuel sold at any gas station. India announces squad for West Indies ODIs and T20s. India's white ball captain Rohit Sharma has fully recovered from his injury and will lead the Indian side. It would be the first series for Rohit as a full-time ODI skipper after he was ruled out of the South Africa tour because of the hamstring injury. However, Ravindra Jadeja is undergoing his final stage of recovery post his knee injury and will not be available for ODIs and T20s. India on Wednesday announced an 18-member squad for the upcoming ODI and T20 series against the West Indies, starting February 6th. The selection committee has rested pacer Jasprit Bumrah, Mohammad Shami for the series. On the other hand, KL Rahul will be available for the second ODI onwards. Akshar Patel, who missed the South Africa series due to injury, has been named in the T20 squad. India is set to play 3 ODIs at the Narendra Modi Stadium, Ahmedabad from 6th January, followed by the T20I series at the Eden Gardens, Kolkata from February 16th. The legendary singer Lata Mangeshkar was admitted to Mumbai's Breach Candy Hospital on January 8th after testing positive for COVID-19 with mild symptoms. After a few days of being kept under observation, her health is showing improvement as she continues to be in the intensive care unit. The information was shared to her audience by her niece Rachna Shah on social media platforms. She has been given a trial of extubation this morning. Presently, she is showing signs of improvement
but will remain under observation of the team of doctors headed by Dr. Partheet Samdani. Hailed as one of the Indian cinema's iconic singers, Mangeshkar received the Bharat Ratna, India's highest civilian honor, in the year 2001. She is also the recipient of several other awards, including the Padma Bhushan, the Padma Vibhushan, and Dada Saheb Phalke Award, and multiple national film awards. We at ITV Gold wish her a speedy recovery. Love Films to release Side A, Side B on TSeries YouTube channel this Valentine's season. After delivering massive hits across cinemas and OTT platforms, this Valentine's season, Love Films gears up to release a feature film on TSeries YouTube channel. Titled Side A, Side B, this musical love story presented by Love Films will premiere on 11 February 2022. Tapping new age audiences through TSeries' massive subscriber base. Written and directed by journalist turned filmmaker Sudhish Kamath. The film stars debutantes Rahul Rajova and Shivranjani Singh, with music by Sudeep Saroop. Side A, Side B is the bittersweet romantic journey of a young couple taking one last train trip together with their cat Lou from Guwahati to Mumbai, as the fate of their relationship hangs in the balance. The live musical playing out through 10 songs captures the climactic moments between the young lovers torn between ambition and growing distance as Joel and Shivi realize they might be headed in different directions. This is the first time a movie for a young audience is premiering on the YouTube channel with the largest subscriber base in the world. वो कितने साल बाद देखी यार केस्ट, कुछ लिखा भी नहीं है। लिखा कमाल चीज है यार, देखें जल्दी कर। सिमरन कहती है मैंने कहा था ना, मैंने कहा था ना, मैंने कहा था ना, मुझे ले जाओ। मैं सुना तेरे को केस्ट है। नहीं जी, अल्लाह की कसम ऐसी कोई बात नहीं जी, गलत किसी ने बोला। अल्लाह की कसम नहीं कर दे, कल की मैं यहाँ में देखूंगा किसी ने कहीं। ये क्या है? फिल्में और फाश गाने इस्लाम के खिलाफ हैं, लिहाजा तमाम हजरात अपने घर में रखे हुए टीवी और टेप रिकॉर्डर जला डालें, वरना सबका यही हाल होगा। खुदा ऐसा नहीं हो सकता मेरे भाई कि बिना वजह अपने बंदों को छोटी छोटी बातों पे सजा देता फिर। मतलब खुदा ना हुआ पाकिस्तान का जनरल जिया हो गया। कभी वो भी दिन वापस आएंगे, पूरा इलाका आता था फिल्म देखने। मतलब ये रशीदे कि अब हिंदुस्तानी फिल्में तो यहाँ आएंगी नहीं, तो अपनी फिल्म क्यों ना बनाए। दुनिया हॉलीवुड और बॉलीवुड के पीछे भागती है ना, हम लोग अपनी अलग फिल्म इंडस्ट्री बनाएंगे, बॉलीवुड। 4,500 रुपए देने हैं कैमरे वाले को, तभी शूटिंग शुरू होगी। जोर से खटखटाओ ना राजन भैया, ये तो हम ही आवाज नहीं आ रही। तुम लोगों ने रिक्वेस्ट की थी मुझसे कि राजन भैया हमारी फिल्म के हीरो बन जाओ, मैं मान गया रिक्वेस्ट। माँ ये बात चोरियां डाके पड़वा रहे हो मुझसे। 13 रुपए असलम। आपने ये करना है कि जैसे ही राजन भैया मीत और इम्तियाज पे पिस्तौल रखें, म्यूजिक दबा देना बस। मतलब इतने सारे लोग मिल के आधी बोतल बियर टिका गए। ज्यादा है ना तभी मैं कहूँ बेचैनी सी हो रही है। माई बस स्याबाब आ गया, अब नहीं हो पाएगी शूटिंग। आराम से काटना इनके गले, हलाल करना, झटका ना हो। बाली गोलियां चल रही हैं, बाली। ठीक है, एंटरटेनमेंट सर, ये लोग क्या कम एंटरटेनमेंट करते हैं।
गोली कब चलानी है फिर? अरे सीन तो शुरू होने दे यार। Mika Singh, along with Lakshmi Rai, spotted on the sets of Hunarbaz, promoting his new song Majnu 2.0. मजनू एक ऐसा गाना है कि आप बार बार भी सुनोगे ना तो ये आपको यू स्टार्ट हमिंग दिस सॉन्ग। इतना कैची सॉन्ग है। इसका अलग वर्जन आ रहा है अभी, जो हम सब अभी जिस सॉन्ग को प्रमोट कर रहे हैं। एक डीजे मिक्स सॉन्ग आ रहा है सुमित के साथ और मिका पाजी के साथ। एंड एज यू ऑल नो, मिका इज़ अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन एंड अ ग्रेट फ्रेंड बिफोर एनीथिंग एल्स, अ ग्रेट ह्यूमन। उनका जो आवाज़ में ही जो जलवा ये मिका करता है वो अलग ही बात है। वॉट एवर सॉन्ग ही हैज संग, ऑल आर हिट सॉन्ग्स। एंड मैं यही आई एम होपिंग दैट मजनू द रीमिक्स वर्जन ऑल्सो मेक्स नॉइज़। एक अच्छा क्लब सॉन्ग मिल गया है अभी सब लोगों को। उसका जो स्लो वर्जन सॉन्ग भी अभी जो रिलीज़ हुआ था, I think it's done amazing and it's already a hit. तो अभी जो दूसरा वर्जन आ रहा है and I'm sure कि ये भी कमाल करेगा। And Mika, being Mika with his voice, any song is a blockbuster. So मिका पाजी की सेल्फलेसली प्रमोट करते किसी आर्टिस्ट को विदाउट एनी पर्टिकुलर रीजन, जो हर कोई नहीं करता है शायद इंडस्ट्री में, तो वो बताइए वो कितना स्ट्रेंथ मांगती है? इसीलिए तो मैंने पहले बोला कि मोर देन अ स्टार फर्स्ट इज़ अ फ्रेंड, बिकॉज मैंने उनका अलग क्वालिटीज़ भी देखा है ऑफ स्क्रीन। ये कितने चैरिटी करते हैं, कितने लोगों का मदद करते हैं। ही इज़ गॉट अनदर साइड ऑफ हिम जो वो दिखाते नहीं हैं। हम जैसे दोस्त लोग हम देखते रहते हैं एंड देयर आर लॉट्स टू लर्न फ्रॉम हिम। ही इज़ जस्ट नॉट अ टैलेंटेड पर्सन बट ही इज़ अ ग्रेट ह्यूमन। बहुत मदद करते हैं, वैसे ही मतलब चलते चलते मदद कर लेंगे लोगों का। सो दैट वे गॉड ब्लेस हिम, बिकॉज आई थिंक वॉट एवर टुडे मिका इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ हिज टैलेंट, बिकॉज ऑफ द वॉइस दैट ही हैज़, यूनिक वॉइस, एंड प्लस ये जो अच्छा काम और जो बोलते हैं ना अच्छा कर्म। सो आई थिंक दैट्स वाई दैट्स कीपिंग हिम ऑलवेज ऑन टॉप। वन मोर थिंग, लास्टली पुष्पा को इतना ग्रेट रिस्पॉन्स मिला, सॉन्ग्स, मूवी, और खासकर यहाँ नॉर्थ में बात कर लें, वेस्ट में बात कर लें, तो ये कितनी बड़ी बात है कि इतने डिफिकल्ट टाइम्स में पुष्पा बिंग अ मेजर ब्लॉकबस्टर है। व्हाट यू थिंक, बिकॉज़ यू हैव कनेक्शन विद द साउथ इंडस्ट्री। सो See, the thing is, Pushpa has set an example during COVID times. ये हमेशा होने वाला ही था, because South is one industry where I feel proud to talk about it, because मैं वहाँ की हूँ, मैं वहाँ पे बहुत सारे फिल्म्स कर चुकी हूँ। The thing is, Pushpa itself is a great film, a great entertainer, जो हम लोग आजकल लास्ट 2 years में एक होप्स हार चुके थे कि अभी थिएटर वाला जो सिनेरियो है वो वापस आएगा या नहीं। सो पुष्पा एक ऐसी फिल्म है जो हमको होप वापस लेके आई है कि ऑडियंस अगर अच्छा फिल्म दो, अच्छा कंटेंट दो, तो नथिंग कैन स्टॉप देम। एंड आई होप दैट हमारा जो थिएटर रिलीजेस है अभी खुल जाए एंड वी गेट बैक टू नॉर्मल, बिकॉज पुष्पा हैज सेट एन एग्जाम्पल फॉर इट। तो फाइनली इट्स अ ग्रेट फिल्म, आई हैव वॉच्ड इट टू। अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय बनी, Alu Arjun, we call him Bunny. So what a performance, what a brilliant performance, I must say. Plus गाने उसके सारे viral हो चुके हैं. So this is a product of a great film. So I hope that we all come together, we all stay strong during this time and not lose hope, क्योंकि अच्छे films के बहुत people need entertainment. आजकल बहुत entertainment है, but good films should release in theaters and it should do well like Pushpa. मिका भाई जानना चाहूँगा, हुनरबाज के सेट पे आया, क्या कहना चाहेंगे, कैसा माहौल? बहुत मज़ा आया यार, मतलब इतने टैलेंटेड बच्चे। एक्चुअली मैंने बहुत सारे रियलिटी शोज़ देखे हैं, सिंगिंग रियलिटी शोज़ देखे हैं, लेकिन ये कुछ अलग है, ये बिल्कुल अतरंगी शो है, जिसमें पहली बार मैं देख रहा हूँ कि एक हॉरर शो उन्होंने पूरा दिखाया। दूसरा एक बहुत ही प्यारा बैंड था, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म करा एंड मुझे भी मौका मिला उनके साथ जुगलबंदी करने का, और इट वाज ए ब्यूटीफुल शो। एंड हमारे प्यारे जजेस हैं करण जौहर साहब, मिथुन दा एंड प्रणीति, सो वी हैड ए ग्रेट टाइम। बाकी आप जब शो देखेंगे यू विल लव इट,
इतनी हमने मौज मस्ती करी है, इतना हमने पागलपंती करी है, वो आपको नज़र आएगी। ये भी लोग कभी कभी बहुत जज्बाती हो जाते हैं, जी। कंटेस्टेंट्स भी और जजेस भी काफ़ी मुश्किल दौर से गुजरते हैं, जो कंटेस्टेंट्स आते हैं छोटे शहर से आते हैं, उस बारे में बताएं। नहीं, आप खुद एक्चुअली भी दे सब- आर वेरी स्वीट, टू बी वेरी फ्रैंक। तीनों जो जजेस बहुत प्यारे हैं। एंड आज मैं अपना गाना प्रमोट करना है, गाने का नाम है मजनू, और आई थिंक इससे अच्छा मंच नहीं मिलता। अभी मैंने लास्ट सलमान भाई के साथ था बिग बॉस में, अभी यहाँ पे हम आए हैं हुनरबाज में। सो जजेस बहुत प्यारे हैं। बाकी कई शोज़ में ऐसे होते हैं कि जो जजेस हैं बड़े रूड होते हैं, बट दे आर पूरा हंस खेल के मजाक मजाक में वो सिलेक्ट भी करते हैं और आउट भी कर देते हैं। लक्ष्मी राय जी आई थी और जी। उन्होंने कहा कि इनका खाली अच्छे कलाकार नहीं है, इंसान जी, के जी। तौर पे भी जितना चैरिटी करते हैं और जेनरस एक्ट है उनका, क्या जी। कहना चाहेंगे कि आप जितना करते वेल, हैं। लक्ष्मी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। एंड जो हमारा गाना है, गाने का नाम मजनू है, विच इज़ कंपोज बाय शारिब तोशी। एंड दूसरा जो इसका जो मजनू पार्ट 2 आ रहा है, वो हमारे अंदर डीजे स्मिथ सेठी जिन्होंने इसका रिमिक्स करा है। एंड लक्ष्मी एंड शमा सिकंदर दोनों गाने के अंदर हैं, और ये इतना कमाल का वीडियो हमारा आने वाला है। एंड शी इज़ अ गॉर्जियस गर्ल, और जब आप ये गाना देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इतना सब कुछ तो आप करते ही हैं सोसाइटी के लिए, क्या अलग करना चाहने की ख्वाहिश है कि बहुत नाम मेरा जो म्यूज़िक कंपनी मैंने अभी खोली है, म्यूज़िक एंड साउंड, ज़्यादातर जो सिंगर्स हैं वो खुद अपने चैनल्स खोलते हैं जिस पे वो अपने आप को प्रमोट करते हैं। तो मेरी इच्छा है कि जो भी नया टैलेंट है, चाहे वो कॉमेडियन है, चाहे वो मॉडल है, चाहे वो सिंगर है, चाहे वो म्यूज़िक डायरेक्टर है, राइटर है, इवन वीडियो डायरेक्टर है या कोरियोग्राफर है, तो मैं सबको वो चांस दूँ। जब मैं एक गाना बनाता हूँ तो न्यू कोरियोग्राफर होता है, न्यू वीडियो डायरेक्टर होता है, और न्यू राइटर होता है, न्यू कंपोजर होता है। तो मेरा यही बस दिली ख्वाहिश है कि मैं न्यू टैलेंट को प्रमोट करूँ। सलमान भाई, क्या जानना चाहूँगा कि वो भी कायल हैं हाँ। काफ़ी आपके टैलेंट के, आपके क्या कहना चाहेंगे, कैसा सलमान भाई इज़ लाइक नॉट मेरे ही भाई हैं, आई थिंक पूरे हिंदुस्तान के उनके जो बहुत सारे फैंस हैं उन सबके वो भाई हैं। बट ही इज़ द रियल किंग, जो हमेशा अपने छोटे भाइयों को बहुत प्यार करते हैं, मुझे खास करके बहुत प्यार करते हैं। एंड वी हैड अ ग्रेट टाइम इन बिग बॉस, और उन्होंने गाना भी गाया, तुझे जब से अपने स्टाइल में उन्होंने गाना गाया मजनू। सो सलमान भाई इज़ ऑसम। सलमान भाई वी लव यू। तो ये भी कहना चाहूँगा कि रियलिटी शो में आए प्रमोट करने, हिस्सा भी रहे, खुद का कोई ऐसा रियलिटी शो लाना चाहते हैं आप खुद? रियलिटी शो देखो प्लान होते रहते हैं। मैं ज़्यादातर रियलिटी शोज़ नहीं करता, मैं साल में कोशिश करता हूँ, 2 साल में कोशिश करता हूँ एक रियलिटी शो में करूँ। सो अगर कोई अच्छा रियलिटी शो होगा मैं ज़रूर करूँगा, जिसके अंदर मेरी ज़रूरत हो, मतलब एज ए सिंगर। तो बाकी सारे रियलिटी शोज़ अच्छे हैं, आई एम श्योर कि कोई ना कोई अच्छा आएगा तो मैं ज़रूर करूँगा। थैंक यू सर, थैंक यू। And that's a wrap on Vision of Asia tonight. Send us your suggestions with community news that you would like us to cover for our print and television coverage at events@itvgold.com. Follow us on our Facebook handle @itvgold, subscribe to our YouTube channel, and pick up a free copy of Desi Talk if you are in the tri-state or in the Chicago area, for news on community, entertainment, and events in US and India. You can also read the News India Times newspaper online at www.newsindiatimes.com, or subscribe to the hard copy by calling 212-675-7515. And once again, this is Pia Jyoti Khatru saying goodbye.